Now, members of parliament and cops in a scuffle, heated arguments, barricades breached, chaos erupted as scores of opposition members of parliament, led by the Lok Sabha leader of the opposition, Mr. Rahul Gandhi, took to the streets in a dramatic protest march from the parliament to the Election Commission of India. Now, what started as a peaceful rally quickly escalated when the Delhi police, as well as the paramilitary, intervened, halting the members of parliament just a short distance from the EC office. Amid heated arguments, tempers flared and a scuffle broke out between MPs as well as the police and security personnel. Protesters led by the India Bloc breached barricades, sitting defiantly on the road in a sit-in, raising slogans demanding a rollback of the controversial SIR in Bihar, or the Special Intensive Revision being conducted by the Election Commission. And they've also accused the Election Commission of vote chori. The dramatic standoff saw more than 300 members of parliament from as many as 25 parties across both the Lok Sabha and the Rajya Sabha, including the Congress, TMC, Samajwadi Party and the NCP, and many more, as key opposition leaders including Mahua Moitra, Akhilesh Yadav, Mr. Mallikarjun Kharge and Sharad Pawar making their presence felt. The protests intensified, the police detained the MPs, but not before the message was loud and clear. They said that they will not back down in their fight for electoral transparency and fairness. देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीस इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीस नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 एमपीस आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई। अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। सर एक बात, सर उधर वाले मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन हम जाना चाहते हैं। सर ओथ की जो बात कर रहे हैं, समाजवादी डिक्लेयर करना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए कि ओथ के जो बोल रहे हैं कि आप रिटर्न में लिख कर दीजिए अगर ये सारे। मैं रिटर्न में दे चुका हूँ, एफिडेविट दे चुका हूँ। आप केवल एक जिलाधिकारी को टर्मिनेट कर दीजिए बस। आपको सर SIR पार्टी अकेले जाना चाहती है? नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा, अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल। सर SIR की तुम्हारे मालिक को जानता मैं। सर अखिलेश सर हो गया जो SIR को लेकर कहा जा रहा है। हो गया डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। डरे हुए हैं, कायर हैं, सरकार कायर है। Well, strong comments coming from the opposition. Now, let's take a look at these dramatic visuals on your screens. Akhilesh Yadav, Member of Parliament from the Samajwadi Party and also the party leader, as well as Mahua Moitra of the TMC, two prominent faces in the protest. Watch now as they try to breach the barricades to continue their march towards the Election Commission office. Meanwhile, the police are claiming that these MPs had been stopped for their own safety. The police officials have also said that the decision was made to prevent any law and order situation from escalating or growing worse. Let me go across to my colleague Pragya for more on this. Pragya, eventually a lot of these members of parliament were detained, and Akhilesh Yadav, after he stepped over the barricade, decided to hold a sit-in dharna and an impromptu press conference as well. So these protests did escalate. There were dramatic scenes outside the Transport Bhavan in particular, and many of these MPs were later herded into buses for detention. Tell us about the growing standoff between the government, the Election Commission and now the opposition parties, because the opposition MPs, including Rahul Gandhi, are completely unwilling to budge. You are absolutely right. In fact, the opposition, is not participating in all the debates and many of the bills have been passed by the government. Having said that, opposition did come back to the House. And in fact, they started sloganeering inside the House, and in fact, they wanted a discussion on SIR.
and they started creating the ruckus in the house. And this also leads to adjournment in Lok Sabha and Rajya Sabha at 2 points of time. And in fact, there was a time when in Rajya Sabha, Mr. JP Nadda had stood up and saying, that this doesn't augur well as far as Parliament is concerned. We would want you to participate in the debate, but it looks like that you are trying to take the House, as hostage. That we won't allow, and in fact, democracy would want you to participate in the debate. But having said that, it looks very clear from today's events, turn of events, that opposition is not going back on the demand of a debate on SIR. In fact, the new target is Election Commission, despite the fact that there has been clarification that had come from Election Commission saying that we also, in fact, Jairam Ramesh, the acknowledgement by Mr. Jairam Ramesh has been put out by Election Commission saying he acknowledged that 30 members can come. In fact, there is a paucity of space. And in fact, Siddharth, if you have ever gone to Election Commission, you must be knowing that there is a little space and 300 MPs can't fit in that particular, place. So, having said that, Election Commission wanted to meet them. In fact, time was given at 12, but they decided that they are going to attack Election Commission. And, the kind of drama that we had seen, it also looks like that all the opposition parties together are going to take on Election Commission in coming days, and this is not going to settle down just now. Absolutely. The opposition has been alleging complicity between the Election Commission of India and the Bharatiya Janata Party in manipulating or sabotaging elections in different states. Many thanks for that input that you provided us, Pragya. Now, the opposition is upping the ante against the Election Commission. They claim that there's been vote chori as well as booth capturing that's taken place, with leaders pointing fingers at the government's influence on the Election Commission. The Congress has hailed Rahul Gandhi and is claiming that he's following the footsteps of Mahatma Gandhi in his fight for justice. Other opposition parties have announced a march to save democracy and demanded answers from the Election Commission. The allegations don't end there. The opposition is also questioning the visibility of government influence, which they claim is in fact weighing in heavily on the office of the Chief Election Commissioner. Let me go across to Niyamika for more on this. Niyamika, you've been tracking the protests that have been taking place all through this morning as well as the afternoon. The opposition not backing down despite detentions of several members of Parliament who were subsequently, of course, herded into a bus once they embarked upon their protests. What's happening now? Because Parliament has commenced, there's been some proceeding taking place in the Lok Sabha, but the protests still ongoing. Well, yes, indeed, Siddharth. And just now we have also been joined by the Congress Party's General Secretary, Mr. Harish Chaudhary with us. Sir, जिस तरीके से लगातार विपक्ष आवाज उठा रहा है, वोट चोरी का जो आप लोगों की तरफ से एलिगेशन लगाया गया है, आज आप लोगों को इलेक्शन कमीशन भी जाना था, लेकिन आपको जिस तरीके से डिटेन किया गया, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी जो आवाज है वो सुनी जाएगी या नहीं? क्योंकि वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आप लोग रिटर्न में क्यों नहीं दे रहे हैं, डिक्लेरेशन क्यों नहीं दे रहे हैं इस बात का? ये देश का दुर्भाग्य है कि 300 सांसद चुनाव आयोग जा रहे हैं और उनको चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। जो मूल सवाल राहुल गांधी जी ने उठाए हैं उनका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के पीछे छुपकर उन मूल सवालों का जवाब अगर चुनाव आयोग नहीं दे रहा है तो ये अपने आप में ही बात को तायद करता है कि उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। किरण रिजिजू जी जो जवाब देने के लिए बात लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक तर्क दे रहे हैं, जिस दिन चुनाव आयोग के चयन के संदर्भ में जो पहले की व्यवस्था थी, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो लोकतांत्रिक थी या भारतीय जनता पार्टी द्वारा उस व्यवस्था में परिवर्तन कर प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और भारतीय सरकार का ही नुमाइंदा, तो 2-1 से व्यवस्था जो अपने निष्पक्ष व्यवस्थाओं को एक पक्षीय में करना, वो लोकतांत्रिक थी। किरण रिजिजू जी, देश जान चुका है कि कौन लोकतंत्र है और कौन अलोकतांत्रिक है। तो इस तरह से चुनाव आयोग के प्रवक्ता आप लोग नहीं बनो, स्वतंत्र संस्था है। चुनाव आयोग को जो सवाल राहुल गांधी जी ने किए वो किसी भी कूतर्क से उनको टालना नहीं चाहिए। लेकिन सर, चुनाव आयोग की बात करें तो लगातार उनकी तरफ से भी, चाहे कर्नाटका से हो या हरियाणा से हो, जिस तरीके से जवाब आप लोगों को मिल रहा है, लेटर लिखा जा रहा है राहुल गांधी जी को,
इसमें कहा जा रहा है स्टर्न वार्निंग है कि आप ओथ ले और उसके बाद रिटर्न में ये चीज दे, अदरवाइज आप ये सारे एलिगेशंस जो लगा रहे हैं उसको वापस ले। मैं चुनाव आयोग से कहना चाहता हूं, क्या ये ओथ की व्यवस्था है? शिकायतकर्ता द्वारा ओथ की व्यवस्था है? नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी? जो आंकड़े हैं वो खुद चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, उनके आंकड़ों की जिम्मेवारी किसकी है? उनके आंकड़ों की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की। संविधान के अंदर हर मतदाताओं का एक मत का अधिकार है। क्या ये देश में होना चाहिए? चुनाव आयोग को ओथ देना चाहिए कि जो सूची है मतदाता वो बिल्कुल सही है। ये ओथ चुनाव आयोग को देना चाहिए। So that's my colleague Niyamika speaking to Mr. Harish Chaudhary, General Secretary of the Congress Party. We have some more reactions lined up that came in earlier in the day at the time that the protests had been taking place on the part of the India bloc. Let's listen in. ये हमारे लोकतंत्र पे सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं, जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई, और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। Now, several senior members of the Bharatiya Janata Party have also reacted, including union ministers. They've basically accused the Congress Party of trying to undermine the country's democratic fabric. The BJP leaders have claimed that the opposition thinks that they own India and that democracy is not in their nature. They also accuse the opposition for not allowing the parliament to function properly and instead focusing only on making headlines. On the issue of SIR being undertaken by the EC in Bihar, the BJP has contended that the opposition should have submitted an affidavit and chosen a proper channel to bring their grievances to the fore. Instead, they've opted for anarchy. That's the allegation coming from senior members of the BJP. वो तो देखते हैं, अब विपक्ष तो पार्लियामेंट चलाने में उसका कोई रुचि नहीं है, उनका तो सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए बहुत ही नीचे स्तर का जो शब्द यूज करते हैं मैं कहना नहीं चाहता हूं, और इनका पार्लियामेंट संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, किसी में विश्वास नहीं। राहुल गांधी जी मैं बहुत देख लिया है, ये सुधर नहीं सकते हैं। एक एमएलए कर्नाटक का स्वयं बता रहा है कैसे उन्हीं की पार्टी ने ये सब गलत वोटर दाखिल किए, और ये गलत वोटर को निकालने का माध्यम स्वाभाविक रूप से इलेक्टोरल रोल को ठीक करने का ही है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं। Well, we have an important piece of news coming in from the state of Karnataka. This is a very big development indeed, where the Karnataka minister, Mr. K.N. Rajanna, has submitted his resignation from the post of cabinet minister. Now, remember that Mr. Rajanna had questioned his own party's criticism of the election commission of the conduct of elections in Karnataka, saying that the electoral list or the electoral rolls had been prepared when a Congress government was in power. So what's the cause for complaint? That's the question that Mr. Rajanna had asked of Mr. Rahul Gandhi as well as others. Well, it appears that the party has now cracked the whip on one of its own ministers for essentially deviating from the party line. We'll, of course, wait for a reporter to give us details about what exactly transpired between the time that Mr. Rajanna made these comments and now, of course, when his resignation or the news of his resignation has come to the fore. Mr. K.N. Rajanna, member of the Siddaramaiah cabinet in Karnataka, has submitted his resignation from the post of cabinet minister. Is this directly a consequence of the remarks that he's made about the conduct of elections in Karnataka, pretty much giving the election commission a clean chit and questioning his own party stance? Well, we'll have to wait and confirm as to whether or not that was indeed the case. But for the time being, he's submitted his resignation. He's out of the Karnataka cabinet, and it remains to be seen how it affects the party politics in the state of Karnataka, amid criticism that the party might be cracking down
on those who are questioning the party's stand vis-a-vis the EC. Let's listen into what Mr. Rajanna said. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡಿರೋದು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕಣ್ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಏನು ಬೇಡ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಅಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿರೋದು ಸತ್ಯ ಅದರಲ್ಲೇನು ಯಾವುದೇ ಏನು ಸುಳ್ಳೇನಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆನೆ ನಡೆದಿದಾವಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕರೀತಾರ ಇಲ್ವೋ